It's health o'clock now, and parents who constantly give cough syrups to kids, well, this next story is for you. 2 children have died, one in Sikar, one in Bharatpur, both in the state of Rajasthan, both after taking a government-supplied cough syrup containing dextromethorphan hydrobromide. You'll hear that word a lot today. In Sikar, what happened? It was a 5-year-old who had developed a regular cough. His mother took him to the nearby CHC. Under the state government's free medicine scheme, he was prescribed a syrup and given a dose at 11:30 p.m. Around 3:30 in the morning, he started getting hiccups, and by morning, he did not wake up. In the hospital, when he was taken, he was declared dead. In Bharatpur, a 3-year-old, Gagan, was also given the same syrup at a government health center. Within hours, he became unconscious, his heartbeat slowed, and he was though rushed to the hospital nearby on a ventilator, but it was too late. He didn't make it as well. Shockingly, even the community health officer who tested the syrup on himself after having given it to the child, on hearing these complaints that were coming in, he also fell ill. Now, after these reports, the Rajasthan government has banned this specific batch of syrup and ordered an investigation. All government hospitals have been told to stop its supply and distribution. But that leaves a more basic, urgent question. What exactly is this dextromethorphan hydrobromide? And do your kids really need it? This is generally called DM. If you pick up a cough syrup bottle at home, pick it up, see its ingredient list, you'll probably see the word DM mentioned in it. That's what it is. It is one of the most common ingredients in the over-the-counter cough syrups that all of us end up going for. It's a cough suppressant. It works by acting on the brain's cough center to reduce the urge to cough, mainly when you have a dry cough, a hacking cough that doesn't really produce any mucus, doesn't have phlegm. Now, chemically, it's a salt of the dextromethorphan, which makes it easier to dissolve in the liquid medicines. That's why very commonly used. You'll find DM in popular Indian brands like Benadryl, Corex, Escorex, Cofol. Most of these are available over the counter, no prescription even needed, and that's part of the problem as well. Now, what's the world regulators really saying on this story? In 2007, the US FDA had issued a public warning saying do not use cough and cold medications with any form of DM in it in children under 2 years. The risk, they pointed out, was serious side effects like hallucinations, slowed breathing, even death if the dose was too high. Later, the FDA expanded that warning to children under 4, do not have DM. The CDC went a step further. It guided, and I quote there, it said, cough and cold medicines are not safe or even effective in children younger than 6 years and should never be given to infants younger than 2. The American Academy of Pediatricians, they also agree. They are urging parents to not give cough syrups to children under 6 because they simply don't work well and can cause serious harm. But despite all of this, in India, many of these syrups are still sold freely, over the counter, given to young kids without medical guidance. Often, when even the doctor is telling you not to give, we end up giving. So yes, the system is trying to respond, but the deaths in Rajasthan raise the same old concern really on cough syrups. Do our kids really need cough syrups? Now, most coughs in children, especially under 6, they are viral, they are self-limiting, and they don't require medication. Giving them strong medication doesn't really help much. It can actually do more harm, especially when the product is contaminated or misused, which is clearly the matter in this case. So maybe it's also, after this story, don't panic. Instead of asking which cough syrup to give, the question you should be asking is, do we really need a cough syrup? Again, this is all information that we have gathered after speaking to the country's best pediatricians, but ask your pediatrician what is his advice on the matter. But then the question here is very simple. In the case of these deaths, it was clearly a matter of adulteration. The cough syrups, they obviously have a controversial past. They continue to be debated. At the moment, this is the case of the company in question that we are flagging on your screen right now. It's called K Sons Pharma. And after doing a bit of gigging, sort of digging around on this matter, we learned that they are in fact repeat offenders. Documents which have been reviewed by India Today, they show very clearly that this Jaipur-based drug maker
supplied substandard drugs to government hospitals in Rajasthan at least at 2 occasions earlier and was also penalized. Once in 2023 and then in February of 2025 for violation in the Drugs Act. But despite that, it continues to be used for the poorest of poor in the country, in the most inaccessible places, in the places where the education on health, on medicine is very, very poor, and they continue to take lives. Let me quickly cut across on this story to our reporter who's actually tracking all this story and tracking all the latest on the story as well. All right, Sharad is with us. Sharad, हमें थोड़ा बताएंगे, हमने अब वो पेपर्स देखे हैं जिसमें के सन्स फार्मा को बोला गया है, एक बार नहीं 2 बार 2023 में और 2025 फरवरी में भी, कि इनके जो बैच निकले थे कफ सिरप्स के वो अडल्टरेटेड थे, वो मैच नहीं कर पाए स्टैंडर्ड्स, लेकिन उसके बाद भी वो इन अस्पतालों में क्या कर रहे थे, क्यों ये बैचेस निकले? सोनल, देखिए 2 दिन से जो मैं लगातार इसके जांच पड़ताल में लगा हुआ हूं, मेरी समझ में आया है कि ये फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक जो हैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता और जो यहाँ ड्रग कंट्रोलर हैं, उनकी अच्छी खासी सांठ-गांठ है इस पूरे मामले में। ये बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे को जानते हैं। जो फैक्ट्री विजिट की मैंने, उस फैक्ट्री को विजिट करने के बाद ऐसा लगा नहीं कि वहां पर बहुत स्टैंडर्ड की अच्छी दवाएं वहां मिल रही हों। वहां पर गार्ड तक बदल दिया है, ताला लगा दिया है और सब लोग चले गए हैं। जब हमने फोन पर बातचीत करने की कोशिश की मालिक से, तो उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के लिए छुट्टी पर हैं, आप बाद में आइएगा, हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने वही प्लिया दिया जो यहाँ पर अधिकारी दे रहे हैं कि डॉक्टरों की गलती है, उन्होंने ओवरडोज दे दिया बच्चों को। तो हमने कहा ठीक है, बच्चों को दे दिया, डॉक्टर पिया वो भी बेहोश हो गया, वो कैसे हो गया? 10 से ज्यादा केस आ चुके हैं, बहुत ज्यादा तो रिपोर्टेड भी नहीं हुए, बांसवाड़ा जैसे इलाकों में तो रिपोर्टेड भी नहीं हुए हैं। देखिए कहानी क्या हो रही है कफ सिरप की, कि ये नशा के लिए भी बड़ी संख्या में फार्मा कंपनियां सप्लाई कर रही हैं और जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो जांच नहीं कर रहे हैं। अब सरकारी सप्लाई के लिए आप देख लीजिए, सरकारी सप्लाई के लिए 2023 में इसकी जांच हुई और एक कप सिरप को कह दिया गया कि अमानक है, लेकिन सरकारी सप्लाई के लिए बैन होता है, बाजार के लिए बैन नहीं होता है। ड्रग कंट्रोलर राजस्थान में बिक्री के लिए बैन नहीं करते हैं, केवल सरकारी सप्लाई के लिए बैन करते हैं। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर कफ सिरप के नाम पर ये गोरख धंधा कई तरह से चल रहा है। एक ही कंपनी जब बार बार एक दवा को गलत बना रही है तो दूसरे साल से आप क्यों इजाजत देते हो? तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारी डिबार का आप रूल देख लो, 8 पन्ने का कागज मुझे पकड़ा दिए कि इसमें तो लिखा हुआ है कि 5 साल से 1 साल तक किसी एक साल को बार कर सकते हैं, कंपनी को नहीं बार करनी है। हमने कहा कि सबसे मिनिमम आपने चुना 1 साल के, और 1 साल के अंदर फिर आपने देना भी शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर जो कुछ मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो भागा है, फैक्ट्री बंद की है, गार्ड तक बदल दिया है, यहाँ पर अधिकारी बचने की कोशिश कर रहे हैं, नियम कानून में उलझा रहे हैं, डॉक्टर को फंसा रहे हैं कि नहीं वो उसको डोज देने नहीं आया। तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं कि ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसके जरिए सरकारी सिस्टम में सप्लाई हो रही है, ये इस सिस्टम का हिस्सा हैं, इस सिस्टम का हिस्सा हैं। भरतपुर की घटना 4 दिन पहले की है सोनल, सीकर की मौत हुई है परसों। यानी कि अगर सरकार चाहती, प्रशासन चाहता तो इसको पहले से रोका जा सकता था। जो बच्चे अस्पताल में पहुंचे हैं जेके लोन में तो 7-8 दिन पहले पहुंच चुके थे, तो कहीं ना कहीं लिपापोती की कोशिश भी जारी रही। जी, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग शरद, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। और क्योंकि सरकार, आप क्लियरली बता रहे हैं दैट दे आर हैंड इन ग्लव, और इसमें बच्चों की मौत हो रही है और उसके बारे में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अभी आप कह रहे हैं कि जो फार्मा कंपनी के ओनर हैं वो भागे हुए हैं, तो इस पे सरकार क्या करेगी, इस पे ज़रूर नज़र लगाए रखें और हमें अपडेट ज़रूर भेजते रहें कि क्या हो क्या रहा है इस पूरे इशू पर।